हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे रेस्पिरेशन वाले टॉपिक को। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने न्यूट्रिशन को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया था। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पार्ट 1 को देख सकते हैं, उसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। और कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नोट्स एंड इंटरनल एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, सो लेट्स बिगिन विद रेस्पिरेशन। सी, दो टर्म होते हैं, एक होती है ब्रीथिंग, अनदर इज रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीथिंग का मतलब होता है सिंपली द फिजिकल इनटेक ऑफ द एयर। ठीक है, वाइल रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो केमिकल ब्रेकडाउन होता है फूड का। ओके, द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, सिंपली इनटेकिंग एंड एक्सेलिंग, ठीक है, इज नोन एज इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग इज नोन एज ब्रीथिंग, while the chemical breakdown of the food to release energy is respiration. ठीक, आप इन दोनों टर्म का डिफरेंस समझिएगा, रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग के बारे में। ठीक, लेशन सी, इट इज़ द बायोकेमिकल प्रोसेस विच अकर इन द लिविंग सेल टू ऑब्टेन एनर्जी। ओके, क्यों होती है? फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, हमने न्यूट्रिशन में देखा था जो फॉर्म हो रहे थे प्रोडक्ट वो क्या था? ग्लूकोज। ठीक है, सो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज एनर्जी इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट कैसे होता है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है रेस्पिरेशन में? ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज। ठीक है, इन ऑल ऑर्गेनिज्म द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो भी रिएक्शन होती है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे होती है, whether it is occurring in mitochondria, cytoplasm or any other place in the cell. ठीक, तो जो ये ब्रेकडाउन हो रहा है ना ग्लूकोज का, सबसे पहले जो स्टेप होता है रेस्पिरेशन का वो कहाँ होता है? हमारा साइटोप्लाज्मा में। ठीक है, 6 कार्बन ग्लूकोज। ठीक है, जो 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। ठीक है, क्या था? 6 कार्बन मॉलिक्यूल से वो ब्रेक डाउन हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इस टर्म को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? द ब्रेक डाउन ऑफ 6 carbon molecule of glucose into a 3 carbon molecule is called pyruvate. The process is known as glycolysis. ठीक है, now okay, now the fate of this pyruvate, meaning the breakdown of this pyruvate, is depend upon the availability of the oxygen. fate मतलब क्या हो रहा है? अब जो ये पायरुवेट फॉर्म हुआ by the process glycolysis, जो ये पायरुवेट फॉर्म हुआ है इसका फर्दर फेट होना किस पे डिपेंड करता है? ऑक्सीजन पे, कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे। ठीक है, तो इसी की बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं वो फर्दर क्लासीफाई किए गए हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सी, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मीनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ O2, दैट इज ऑक्सीजन. The process of respiration occurring in the presence of oxygen. ठीक, so let's end this. See, conditions. What are the conditions required for aerobic respiration? It occur in the presence of oxygen. ठीक है, and the location where it is occurring, aerobic respiration, in mitochondria. ठीक, and what is the process? See, pyruvate is completely break down into carbon dioxide and water. ठीक, during aerobic respiration, the pyruvate, the formed pyruvate by the process of glycolysis has been break down into carbon dioxide and water molecule. Okay, now what's the energy? It releases a large amount of energy. During aerobic respiration, a large amount of energy is released.
about 38 ATP. Okay. Wow. Okay, now understand about the equation. Okay, see C6H12O6, which is glucose, in the presence of oxygen. Why oxygen? Because it is a aerobic respiration. Aerobic respiration occurring in the presence of oxygen. ठीक है, what it form? Carbon dioxide and water along with energy. The formed energy is 38 ATP and it is very large amount. Okay, now understand about anaerobic respiration, meaning anaerobic, occurring in the absence of oxygen. ठीक है, so here are two. One is fermentation. ठीक है, one example you can see that fermentation. ठीक, so what are the conditions for anaerobic respiration? It occur in the absence of oxygen. Secondly, the location occur in cytoplasma, while the aerobic respiration was occurring in mitochondria. You can see the organism in which it occur, yeast. Okay, and what is the product? The fate of pyruvate is ethanol plus carbon dioxide plus energy, but only 2 ATPs are formed. Okay, so what are the product? Ethanol, carbon dioxide and very little amount of energy. Now respiration in muscle cell also occur in the absence of oxygen. So what are the condition? It occur during the vigorous exercise. ठीक है, when oxygen is consumed faster than it has been supplied. मतलब जो सप्लाई है ऑक्सीजन का वो स्लोअर है एज कम्पेयर टू जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है बॉडी में. ठीक है, सो व्हाट इज द लोकेशन? इट ऑल्सो अकर इन द साइटोप्लाज्मा ऑफ द मसल सेल. एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट? ड्यूरिंग दिस लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी हैज बीन फॉर्म्ड. ओके, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज? इसके क्या रिजल्ट होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? सी, ड्यूरिंग दिस respiration in muscle cell in the absence of oxygen, when you do the vigorous exercise, there is accumulation of the lactic acid, okay, in the muscles, which causes the muscle cramps. Okay, so this was all about respiration. We have studied what is respiration, what is breathing, and what is the difference between respiration and breathing. Then how the glucose breakdown, what the process called, and what are the product. ठीक है, then we have studied about types of respiration. These are aerobic, anaerobic. In anaerobic we have studied about fermentation and respiration in muscle cells. Okay, now we'll study about human respiratory system. The human respiratory system has been designed to maximize the intake of oxygen and removal of the carbon dioxide. So what are the parts involved in human respiratory system? These are nasal cavity. It includes the fine hairs which help in the filtration. Along with fine hair, it also include mucus to remove the dust and the germs. Second, trachea, which is also known as windpipe. It contains the ring of cartilage. Okay, so windpipe contain the ring of cartilage which ensure that the air passage does not collapse even when there is no air. ठीक है, एयर के एब्सेंस में जो हमारा पैसेज है वो कोलैप्स ना हो जाए. ठीक है, इसीलिए वहाँ क्या होता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है. कहाँ पे? विंड पाइप में. नाउ लंग्स, these are the primary organ where the exchange of the gases take place. Okay, now alveoli, these are tiny balloon like structure at the end of bronchioles. ठीक है, at the end of bronchioles these are tiny balloon like structure like this. Like this, these are alveoli. ठीक है, अभी हम डायग्राम से और अच्छी तरीके से समझेंगे. ठीक, अभी इनके बारे में समझते हैं ये सब हैं क्या. ओके, so the alveoli are the tiny balloon like structure at the end of the bronchiole. They provide the massive surface area for the exchange of gases. ठीक है, and these are surrounded by the network of blood capillaries. Okay, now what is the mechanism of breathing? See, breathing,
फर्स्ट इन्वॉल्व द इनहेलेशन. इनहेलेशन मीनिंग वी ब्रीथ इन. ठीक है, व्हेन वी ब्रीथ इन, जस्ट इमेजिन व्हेन यू ब्रीथ इन द रिब्स आर मूव अपवर्ड. ठीक है, ट्राई करके देखो. जब आप ब्रीथ करते हो इन, तो जो रिब्स होती हैं वो कहाँ होती है, ऊपर की तरफ मूव होती है. मूव अप एंड आउट. ठीक है, आगे की तरफ. ठीक, एंड द जो डायफ्राम होता है वो फ्लैटन हो जाता है. ओके, दिस इंक्रीजेस द चेस्ट कैविटी वॉल्यूम. ठीक है, जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, लोअरिंग प्रेशर एंड सकिंग एयर इनटू द लंग्स. सी, इनहेलेशन के टाइम पर क्या क्या होता है. रिब्स मूव अप एंड आउट. ठीक है, डायफ्राम फ्लैटन्स, increases the chest cavity volume, lowering pressure, which lead to sucking of air into the lungs. During exhalation, the ribs move down and in. Okay, and the diaphragm releases, become dome shaped. This decreases the chest cavity volume, pushing air out. ठीक है, तो ये याद रखो, ये होता है चेस्ट कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, लोअरिंग होता है प्रेशर, सकिंग एयर इनटू द एयर लंग्स. सो ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन व्हाट आर द प्रोसेस बीन अकर्ड. रिब्स आर मूव अप एंड डाउन, रिब्स आर मूव अप एंड आउट. Diaphragm flatten, increase the chest cavity volume, lowering pressure, sucking air into the lungs. Simple. During exhalation, rib move downward and in, diaphragm relaxes. Okay, chest cavity volume decreases, pushing air out. Now, what is residual volume? See, the lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed. ठीक, रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है जो हमारे लंग्स होते हैं ना, वो कंटेन करते हैं इनफ ऑक्सीजन. ठीक है, इनफ वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड. ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड. दिस इज नोन एज द रेसिडुअल वॉल्यूम. ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम it is the lungs always contain the residual volume of air. ठीक है, so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and carbon dioxide to be released. Okay, now we will study about the transportation of gases, how these gases has been transported. See, oxygen, it has been carried by a respiratory pigment. जो ऑक्सीजन होती है उसको कौन कैरी करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, विच इज हीमोग्लोबिन, विच इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स. ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में. सो इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन द ब्लड प्लाज्मा. ठीक, तो ये ब्लड प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होती है डिजॉल्व्ड फॉर्म में. ओके, अब हम जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, उसको और डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू पढ़ा था. ठीक, सी द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज दैट हेल्प यू इन breathe and exchange the gases. Which are the gases? O2 and CO2 between the atmosphere and the blood. Between the atmosphere and your blood. Okay, now we will understand the entire anatomy. See, the passage of the air. See, the air travels through the specific pathway to reach the site of exchange. Okay, so what are these pathways? First of all, nostril and nasal cavity. See, air is taken through the nostril. The external nostril help in the intake of the air. See, after that it has been filtered by the fine hair and mucus. ठीक है, to trap the dust and bacteria present in the air. Now the nasal passage also warm and moisture the air. So this is the role of nostril and nasal cavity. So nostril take up the external
external nostril helped in the intake of air. Then it filtered it by the presence of fine hair and mucus. And the role of nasal passage is to warm and moisten the air. Now pharynx and larynx. From the nasal cavity, air passes through pharynx into the larynx. Okay, the larynx is the voice box. Voice box. Okay, or sound box. Now the trachea, windpipe. It is a tube that carry air towards the lung. Okay, अभी हम जब डायग्राम देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक. So trachea, windpipe. It is a tube that carries air towards the lungs. And it has been supported by a C-shaped ring of cartilage. Okay, it is supported by C-shaped ring of cartilage which prevent the passage from collapsing even when there is no air. Okay, so under इसका रोल समझना, और ये कहाँ होता है रिंग ऑफ कार्टिलेज और इसका क्या रोल होता है, इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. What are these? See, the trachea divide into bronchi. Okay, inside the lungs, these divide further into smaller and smaller tubes called bronchioles. Now alveoli. At the end of the smallest bronchiole, a tiny balloon-like structure has been formed which is known as alveoli. Okay. Now the site of exchange which is known as alveoli. See, the alveoli are the functional unit of the lungs because at alveoli only the exchange of gases has been taking place. Okay, so these are the functional unit of the lungs. So alveoli are the functional unit of the lungs where the actual exchange of the gases take place. Okay, now understand the design of alveoli. Okay, these are the balloon-like shape that provide the enormous surface area. Okay, and these are thin walled. Okay, the walls of alveoli are only one cell thick to provide the rapid diffusion. What is diffusion? The movement of gas from higher concentration to the lower concentration is known as diffusion. Okay, they also contain blood supply. They are covered by an extensive network of blood capillaries. What? Alveoli. Okay, the alveoli has been covered by the extensive network of blood capillaries and the oxygen move from the alveoli into the blood. Okay, alveoli से oxygen कहाँ move कर जाती है? Blood में. Okay, while carbon dioxide move from the blood to the alveoli. और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड से एल्वियोलाई में चली जाती है, वाइल जो O2 होता है वो एल्वियोलाई से ब्लड में आती है. ठीक. नाउ अगेन वी विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन मोर डिटेल. सी, ब्रीथिंग इन्वॉल्व द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेस्ट कैविटी. ओके, टू मूव एयर इन एंड आउट. ठीक है, एयर के इन और आउट मूवमेंट को रेगुलेट करती है चेस्ट कैविटी. ठीक है. सो दो स्टेप होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन मीनिंग ब्रीथिंग इन, एक्सहेलेशन मीनिंग ब्रीथिंग आउट. सी, ड्यूरिंग इनहेलेशन द diaphragm contract and move downwards and rib muscle contract, lifting ribs upward and outward, and there is expand in the chest cavity creating a vacuum that pull air into the lungs. Now exhalation. See, during this the diaphragm relaxes and move backward. Okay, and the ribs move downward and inward. The chest cavity contract, pushing the air out of the lungs. Okay, so this was all about exhalation. Now let's understand how the gas is transported in the blood. See, since body is large, simple diffusion is not enough to carry oxygen to all tissues. Okay, simple diffusion process से नहीं होगा. See, तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो कैरी बाई होती है किससे?
रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो कि होता है हीमोग्लोबिन, कहाँ मिलता है? आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स में. ओके, सो हीमोग्लोबिन हैज़ द हायर एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, while the carbon dioxide CO2 is more soluble in water. Okay, CO2 is more soluble in water than oxygen, so it is mostly transported in dissolved form in blood plasma, जैसे कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन इन ब्लड, सो इट हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा. ओके, और रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में फिर से हम समझते हैं अच्छे से. सी, इवन वी ब्रीथ आउट फोर्सफुली. ठीक है, आप कोशिश करो कि आप जो एक्सहेल जब कर रहे हो तो आप फोर्सफुली जो भी एयर है प्रेजेंट है लंग्स में उसको फोर्सफुली भी ब्रीथ आउट कर दोगे. उसके बाद भी जो लंग्स होते हैं ना वो ऑलवेज कंटेन अ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर. ठीक है, दिस इंश्योर दैट देयर इज इनफ टाइम. इसका रोल क्या होता है? ये इंश्योर करता है कि इनफ टाइम हो फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड, विच प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द एयर सैक. ठीक है, टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द एयर सैक. सो दिस इज द डायग्राम. सो अब हम समझते हैं डायग्राम को. ठीक है, सो व्हाट इज दिस? nasal cavity. This is nasal cavity. Okay, next pharynx. ठीक है, this is pharynx. Next is larynx, the sound box. Next, ring of cartilage which is present in the trachea to prevent the collapse of the trachea in the even in the absence of air. This is trachea, the windpipe. These are lungs. Okay, these are lungs. Next, diaphragm. Okay, these are at the base of the lungs. These are bronchus. The trachea is divided into two bronchi or bronchus. Next, bronchioles. Further, these bronchi or bronchioles are further divided. See, these are further divided. These are known as bronchiole. And each bronchiole terminate with a balloon-like structure which is known as what? Alveoli, which is the site of exchange of gases. Okay, so here is one note. Let's understand about it, what it has been saying. How different environment it. See, if we compare the terrestrial and aquatic respiration, terrestrial meaning over land, aquatic meaning in water. So what is the difference? What is the difference in environment result in? ठीक है, environment change हो गया ना तो उसका क्या result होगा? सी, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. एक्वाटिक में क्या होगा? जो एनिमल होंगे या जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूज़ करेंगे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर. ओके, वाइल जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूज़ करेंगे ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी. ओके, नाउ देयर इज अ एडवांटेज फॉर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. व्हाट? सी, the primary advantage for land animal is the concentration of oxygen. See, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है ना वो एज कम्पेयर टू वाटर बहुत ज़्यादा है. ठीक. सी, एयर कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अबाउट 21%. वाटर हैज़ मच लोअर कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, यूजुअली less than 1%. So what is the consequences? What is the result of this? See, because of the oxygen is scarce in water, the aquatic animal like fishes must breathe much faster than the terrestrial animal or organism to get the enough oxygen for their survival. Due to which there is a change in their respiratory organs and their design. See, both type of organism have evolved specific surface to absorb oxygen. Like in terrestrial they are having alveoli. Okay, so
which usually share 3 features. See, वो कॉमन उनमें 3 फीचर्स होते हैं. व्हाट आर दिस? लार्ज सरफेस एरिया होगा, थिन वॉल होंगे, और वहाँ पे क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई होगा. ओके, सो वाई देर इज लार्ज सरफेस एरिया? टू मैक्सिमाइज द O2 एब्जॉर्प्शन and thin wall for easy diffusion of the gases. Okay, and rich blood supply to transport the gases quickly. समझ आया तीनों का? लार्ज सरफेस एरिया क्यों होता है? ताकि ऑक्सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके. थिन वॉल इसीलिए होती है ताकि डिफ्यूजन ईजिली हो जाए गैसेस का. रिच ब्लड सप्लाई इसीलिए होती है ताकि ट्रांसपोर्ट हो गैसेस का जल्दी हो सके. ओके, सो एक्वाटिक रेस्पिरेशन. सी, फिशेज टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ, ठीक है, एंड फोर्स इट पास टू द गिल्स, ठीक है. नाउ द गिल्स आर feathery structure with many blood capillaries. So as the water passes through them, the O2 dissolved is taken into the blood and O2 released into the water. ठीक है, उस जो वाटर आया उसमें से वो क्या करते हैं, O2 को ले लेते हैं into the blood, ठीक, और जो CO2 होता है उसको रिलीज कर देते हैं वाटर. वाइल द टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, हमारे लंग्स या ट्रैकिया बोल सकते हो आप, ठीक. एक्वाटिक रेस्पिरेशन में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं. तो टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन होता है उसमें लंग्स या हम बोल सकते हैं ट्रैकिया एज अ ऑर्गन होते हैं, ठीक. सो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो यूज़ करते हैं ऑर्गन लाइक लंग्स. व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स? लाइक मैमल्स एंड बर्ड्स. और ट्रैकियल ट्यूब्स, जो ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं वो किस में होती हैं, इंसेक्ट्स में, ठीक. सिंस दीज सरफेस आर डेलिकेट, ये जो भी सरफेस होते हैं ये दोनों ही क्या होते हैं, डेलिकेट होते हैं, ये भी और ये भी, इसकी बात भी की गई है यहाँ पर. सो दीज एक्सचेंज सरफेस आर डेलिकेट एंड मस्ट रिमेन मॉइस्ट फॉर व्हाट, फॉर डिफ्यूजन टू अकर. सो दे आर लोकेटेड इनसाइड द बॉडी. These organs, gills, lungs, trachea is present in tracheal tubes are present in insects, are very delicate. So they has to be located inside the body for the protection against drying out or desiccation. Desiccation meaning some mechanical injury, to prevent any kind of injury. So this was all about respiration in humans. For notes you have to join the Telegram channel. Okay, on Telegram you will get the entire notes of respiration and all topics. And thank you for watching.